If you are tired because your clients, your prospects always negotiate your fees, आप थक चुके हो कि यार इतना मेहनत मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ बट फिर भी हर बार मेरे क्लाइंट मेरे साथ negotiation करते हैं for the fees, let me tell you it's not about your price. It is about something else जो शायद आपने अभी तक समझा नहीं है. इसी वीडियो में मैं उस पूरी चीज की बात करने वाला हूँ. And that is called your positioning in the market, how they see you in their mind. So, if you want to know why your clients are negotiating with you on the price and how you can stop them, this is the video you want to see with full attention and also make notes. Let's get into it. So, why clients keep negotiating your fees? And I'm going to share every single thing in a structured framework. First, we are going to talk about the big idea that you must know about this fundamental. Then, we are going to talk about the generalist trap. Clients never buy services. What they buy, I'm going to talk about that. Why you must have a niche. What is the relevance of it in 2026 and onwards? Why specialists will always win and they will have more power over charging the price. Compliance does not create the premium fees, and I'm going to explain that as well. What is the shift that is happening with respect to positioning? What is the future look like for your profession? What are the action steps for you? And what is the one main thing that you must take away from this video? Let's get into this big idea first. Clients do not negotiate because your fees is too high. आपको पता है ये चीज. Clients negotiate because they do not see any difference between you and 10 other chartered accountants in the same city, same state, same country. When you say you do audit, tax, GST, ROC, you are describing a service, not a value. And you know what? Most of the CAs describe themselves exactly like you. And that's why client को पता ही नहीं चलता है how you are different. And when they don't know how you are different, why should they not compare you on the only element जो उनके पास है, that is the price. The firms that command premium prices solve one high value problem for one specific market. The generalist firm will always take the bottom of the market, and the high end specialist niche advisory firms will always be at the top because they are looking for the clients जो value करते हैं high advisory को, not just the compliance. And this video is going to show you entire pathway जो शायद आपने अभी तक सोचा नहीं होगा. Now generalist trap की हम बात करते हैं जो कि है ऑडिट, टैक्स, जीएसटी, आरओसी, अकाउंटिंग. एवरीवन सेज द सेम थिंग. I meet a lot of chartered accountants in practice and networking events. I see AI and other networking events. आप क्या करते हो? प्रैक्टिसिंग सीए हो. ओके, कोई स्पेशलाइजेशन? नहीं नहीं, ऑडिट टैक्स सब कुछ करते हैं. द नेक्स्ट सीए सेम स्क्रिप्ट. द नेक्स्ट सीए सेम स्क्रिप्ट. No differentiation creates price comparison. Because why should somebody pay the higher price if they cannot understand difference क्या है? Just imagine you go to a showroom and you want to buy a watch. You go to another showroom and say, I want to buy a watch. दोनों वॉच एक जैसी लगती है, एक जैसी साउंड करती है, लुक में भी एक जैसी है, सब कुछ एक जैसा है, पैकेजिंग भी एक जैसी है. एंड वन शॉपकीपर, फर्स्ट वाला शोरूम कहता है 15,000 रुपीज एंड द अदर वन सेज 12,000 रुपीज. When you have no filter in your own mind कि ये घड़ी 15 और 12 में क्या डिफरेंस है, सब कुछ तो सेम है. आप 15,000 की खरीदोगे या 12,000 की? दैट्स द क्वेश्चन टू यू. एज अ ह्यूमन, एज अ कॉन्शियस ह्यूमन, यू विल गो फॉर द 12,000 बिकॉज आपको पता ही नहीं क्या डिफरेंस है. एंड दैट्स द सेम थिंग दैट हैपेंस विथ यू when you become the chartered accountant in practice and the other side is your prospect or your client. Okay, client never buy the service because they are not waking up in the morning and say अरे यार जीएसटी फाइलिंग करवा दें यार हो जाएगी. Of course that is one of their to do if they are handling that function in the finance.
But that is not they think about. They think about the tax saving, tax optimization, प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, कहीं पैसा ब्लॉक हो रहा है क्या? उसको कैसे निकालें? क्या कर सकते हैं? दे थिंक अबाउट स्केलिंग द बिज़नेस, ग्रोइंग द बिज़नेस, दे थिंक अबाउट अवॉइडिंग द कॉस्टली मिस्टेक्स कि यार ऐसी कोई गलती ना कर बैठूँ जो शायद मैं अवॉइड कर सकता था बिकॉज़ मैं इग्नोरेंस हूँ उस एरिया के अंदर, क्या मैं अपना पैसा लूज़ कर रहा हूँ? And these are the things client think about, which is people, your client, your prospect, and in fact, you buy the outcomes, not the compliance. You buy a result. You buy a result, not the problem, not the compliance. When you go to a juice shop, आप वहां पे एप्पल नहीं खरीद रहे हो, वहां पे आप पाइनएप्पल नहीं खरीद रहे हो, वहां पे आप उनकी मशीनरी भी नहीं खरीद रहे हो जिससे जूस बनता है। वहाँ पे आप जाके ये भी इंटरेस्ट नहीं लेते हो कि यार ये मशीन चल कैसे रही है, वो स्विच ऑन कर रहा है, इसमें डाल रहा है, फिर जूस निकल रहा है। आप किस में इंटरेस्टेड हो? तुझसे जूस माँगा जू पाइनएप्पल का ना भाई, वो दे दे। दैट्स व्हाट यू आर इंटरेस्टेड इन एंड दैट इज़ द आउटकम। यू डोंट केयर बाकी चीज़ें क्या हैं। सेम थिंग काम करती है आपके एडवाइजरी प्रैक्टिस के अंदर बिकॉज़ नोबडी बायज़ कंप्लायंस। वो उनकी मजबूरी है। बट वो एक चाहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, एक आउटकम जो उनकी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करे। नाउ व्हाट इज द रियल पर्पस ऑफ अ निश? लेट्स टॉक अबाउट दैट बिकॉज़ मैंने स्टार्टिंग में भी इस चीज़ की बात की थी। अ निश इज नॉट वन सर्विस कि मुझे एक ही चीज़ करनी है, इससे मेरा मार्केट कम हो जाएगा, इससे मैं अपनी ग्रोथ नहीं कर पाऊँगा। रॉन्ग माइंडसेट। अ निश इज वन मार्केट, वन रिकरिंग प्रॉब्लम एंड वन क्लियर आउटकम। ये 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन आपकी निश बनता है। जब आपको इस चीज़ के बारे में क्लैरिटी मिलती है तो आपको समझ में आता है कि एक स्पेशलिस्ट सिर्फ एक चीज़ के लिए जाना जाता है क्योंकि जब मैं बात करता हूँ डी टू सी ब्रांड्स की, उनको प्रॉफिटेबिलिटी चाहिए, डॉक्टर्स को चाहिए टैक्स एफिशिएंट वेल्थ बिकॉज डॉक्टर्स को फाइनेंस का उतना नॉलेज नहीं होता है, मैन्युफैक्चरर्स को मार्जिन इंप्रूवमेंट चाहिए, वर्किंग कैपिटल जो ब्लॉक हो रखी है फॉर व्हाट्स एवर रीजन उनको चाहिए उसमें आके मुझे कोई हेल्प कर दे, कोई मेरे लिए सब्सिडी एग्जेम्पशन है जो शायद मुझे नहीं पता है। SaaS founders को चाहिए financial clarity because they are building software, they are building tech. They don't know the finance. So you are known for who you help, not what you do. Because आपकी टारगेट ऑडियंस जब आप डिसाइड करोगे, उनको क्या प्रॉब्लम है वो सॉल्व करोगे और उनको एक आउटकम लाके दोगे जो कि हमने लास्ट पॉइंट में बात की, दैट्स वेयर you really become stand out, and that is the use case of having a niche rather than saying I am a generalist. तो generalist की कोई केयर नहीं करता है एंड फॉर दैट रीजन स्पेशलिस्ट हमेशा जीतते हैं क्योंकि स्पेशलिस्ट अपने आप कॉन्फिडेंस डबल कर देता है। जब आपको कोई एक सर्जरी करवानी है किसी भी चीज़ की, ब्रेन, हार्ट, व्हाटएवर, जस्ट इमेजिन, आप एक जनरलिस्ट के पास नहीं जाओगे, अरे फिजिशियन के पास चलते हैं वो भी सर्जरी कर देगा, नहीं 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 नहीं, एट दैट टाइम वी वांट द बेस्ट पर्सन बिकॉज प्रॉब्लम इज बिग एंड वी वांट अ क्लियर आउटकम। और हम सिर्फ एक स्पेशलिस्ट को ट्रस्ट करते हैं। आपके पास अगर आईफोन है, कि आप एक बाजू की दुकान पे जाके अपने आईफ़ोन में अगर कोई प्रॉब्लम है करवाओगे या फिर आप डायरेक्ट एप्पल स्टोर पे जाओगे और उस चीज़ को करोगे? क्योंकि आपको पता है एप्पल स्टोर स्पेशलिस्ट है, दुकान वाला नहीं है। स्पेशलिस्ट आर ट्रस्टेड मोर, ट्रस्ट इज़ व्हाट क्लाइंट्स पे फॉर। इन द लास्ट वीडियो के अंदर मैंने बात की थी कि ट्रस्ट क्रिएशन थ्रू एजुकेशन इज़ द थ्रू अथॉरिटी बिल्डिंग जिसकी वजह से आप थ्राइव करते हो। The same pattern applies in professional service. It's not about in doctor का एग्जाम्पल, एवरी सिंगल वेयर जहाँ पे ज़्यादा ट्रस्ट होगा, जहाँ पे स्पेशलाइजेशन होगा, वहीं पे क्लाइंट्स बोलेंगे लेट मी गो टू दिस पर्सन बिकॉज दिस पर्सन इज स्पेशलिस्ट इन दिस स्पेसिफिक एरेना। ऑलराइट, नाउ as I mentioned previously, compliance does not create premium fees because compliance is a burden। और वो सिर्फ उनके लिए है क्योंकि वहां पे लॉ बोलता है कि आपको ये करवाना है, आपको ये ऑडिट करवाना है, इसके लिए लोग करवा रहे हैं। बट हाउ मेनी पीपल रियली सी द वैल्यू? यू नो द आंसर, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। कंप्लायंस इज एक्सपेक्टेड, हर सीए रिटर्न फाइल कर सकता है, सब ऑडिट कर सकते हैं, सब जीएसटी कर सकते हैं। वेरी फ्यू आर नोन फॉर हेल्पिंग क्लाइंट्स मेक बेटर बिजनेस डिसीजंस। एडवाइजरी इज फेयर प्रीमियम प्राइसिंग बिगिन। सो आपको अगर लगता है कि नेगोशिएट मेरे क्लाइंट मुझसे बहुत ज्यादा कर रहे हैं, go to the advisory route and become specialist in one niche।
अब किस तरह से करते हो, दैट आई टीच इन माय प्रोग्राम, इन माय वन टू वन कोचिंग एज वेल. So of course we can talk about that whenever you feel ready about that. But the positioning shift that you need to make is audit, tax, GST सब करते हैं हम सर. No, 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 no. We help D2C founders increase profitability through strategic finance and tax advisory. And this is the work I do with chartered accountants through my 5 step blueprint, because I don't want chartered accountants to stay as a compliance partner. I want them to become a trusted advisor, and that can only happen by following my 5 step proprietary method. And I'll, of course, in the coming videos, I'll share that as well. So you get more insights. And whenever you feel ready to work together, I'll be more than happy to guide you. One describes service, the other describes transformation, and rather the next thing that we talked about, outcome. क्योंकि सभी को उसी से फर्क पड़ता है, राइट? पीपल रिमेंबर स्पेशलिस्ट नॉट सर्विस लिस्ट. नोबडी केयर्स अबाउट द सर्विस लिस्ट. सबको चाहिए कि यार सोल्यूशन मिला क्या, स्पेशलिस्ट ही देता है सोल्यूशन, और वो चार्ज करता है हाई, एंड यू डू नॉट नेगोशिएट विद एन एक्सपर्ट. अब फ्यूचर कहाँ जा रहा है प्रोफेशन का, चार्टर्ड अकाउंटेंसी का? लेट्स टॉक अबाउट दैट. एआई विल मेक कंप्लायंस फास्टर, efficient, and of course cost effective as well. टेक्नोलॉजी विल मेक इंफॉर्मेशन चीपर. इंफॉर्मेशन का पैसा नहीं मिलेगा. कई बार आपको पता चलता होगा आज की डेट में, जब क्लाइंट आपके पास आता है ना, वो चैट जीपीटी, जेमिनाई, यूट्यूब, गूगल, ग्रोक सब कर लेता है. बहुत सारी नॉलेज वो ऑलरेडी ले लेता है. सो टेक्नोलॉजी ने वो चीज़ को चीपर बना दिया है, कमोडिटाइज कर दिया नॉलेज को. आपके पास कोई नॉलेज के लिए नहीं आ रहा है, वो आ रहा है विजडम के लिए, वो आ रहा है इंसाइट्स के लिए, वो आ रहा है एक आउटकम के लिए, क्योंकि उसके पास आज भी एक प्रॉब्लम है जिसका सोल्यूशन एआई नहीं दे पा रहा है उसको. कॉन्टेक्स्ट विल बिकम मोर वैल्यूएबल. one industry depth will matter more than becoming a generalist for everything. Solving one market deeply will matter more. अथॉरिटी कैन नॉट बी कमोडिटाइज. मैंने लास्ट के कुछ वीडियो में बात की थी कि अथॉरिटी को आप कमोडिटाइज नहीं कर सकते. और ट्रस्ट कैन नॉट बी ऑटोमेटेड विद द एआई एजेंट. दैट कैन बी अर्नड, एंड यू कैन अर्न दैट by becoming specialist for one problem that you can solve for a specific audience. Now, what is your action step? If you're constantly defending your fees, do not increase your price first, or question कि मार्केट ही खराब है, क्लाइंट्स ऐसे ही हैं, पैसा नहीं मिलता है. Increase your clarity. Ask yourself, why should my client pay me higher? Am I different than my all other 10 competitors? Majority people are not. Clients do not negotiate with specialists. Clients negotiate with substitutes, जहाँ पे उनको पता है कि ये घड़ी और दूसरी शॉप पे जो घड़ी मिल रही है ना, फ़र्क कुछ नहीं है. तो जो सस्ता है उससे लो ना फिर. फालतू में पैसा क्यों खराब करना है, आप भी सेम चीज़ करोगे. One main thing which I really want you to make a note, save it in your mind, and always come back to it. That is the day you stop selling services and start owning a niche, is the day clients stop comparing you with every other CA, which means they will not negotiate with you for the price, because now they are able to see आप वैल्यूएबल हो, आप यूनिक हो, आप स्पेशलिस्ट हो, and you are the king of your field, and that's what matters to them. I hope you liked this video and got some insights that you are able to implement in your practice. But if you need my support to implement what I shared in this video, and you want to schedule a consultation call so we can discuss how I can help you achieve your goal to become a niche advisory firm, please feel free to click the link below in the description, book a call, and we'll speak and we'll determine what is the best course of action for you so you can achieve the desired outcome. This is Shubham Mittal, a chartered accountant who turned into a coach and mentor in 2029 because I wanted to do something meaningful for my life. And my goal is to help you with these videos so you can go away from the generalist trap and become a niche advisor who is trusted, respected, and valued for the expertise. All right, I'll see you in the next video. Meanwhile, please share your views, your thoughts, your questions in the comment section below. And अगर कोई सवाल है, please WhatsApp me on my number, which is 9619815698,
or email me at connect@the shubhamittal.com or comment below, and I'll be more than happy to create a video around your question. Thank you so much. I'll see you in the next video. Bye.